Hi, good evening. How are you doing? Good evening, everybody. Namaste, and a very, very warm welcome to Mindful Journaling Workshop. Good evening. How are you doing today? Quickly type it in the chat box. जल्दी जल्दी chat box में लिखिए कैसे हैं आप सब. Good, good, amazing, very nice. Yeah. How was today's yoga? कैसा था आज का योगा? If somebody joined the 7 p.m. batch, उनका batch just अभी finish ही हुआ होगा. You must have just ended your batch some time back. Hope you had some time to have your dinner. Yeah. Amazing, amazing. So, how many of us are doing mindful journaling for the first time? We have not attended the previous workshops. Who are those? And if you've attended before, write type B for before. And if you're doing it for the first time, type 1 in the chat box. First time. Wow. So many of us are doing it for the first time. It's going to be a fun 5 day for all of us, whoever is joining for the first time. It's going to be super fun, super amazing. You learn so many things and you learn them for the good. Yes, amazing. I can see most of us are first timers, second timers also. We have some. Very nice. Since you all are joining for the first time, my name is Yamini Agarwal. I work with Habit as the community lead. जितने ये community events हम organize करते हैं apart from yoga, I take care about those events and I try to incorporate more and more programs so that we keep engaged. We also develop a healthy lifestyle apart from yoga. Amazing, amazing. Yes. So, how many of us have been doing um, how many of us have been doing yoga? How many days से कितने दिनों से कर रहे हैं yoga? Am I not audible? Am I audible, visible? 10521. Amazing. All right. 85, 240. Okay. 126, 1 year, 660. Amazing. Okay. So we have all kinds of members. Some old, some new. 5 months, 209. Very nice. Very nice. How many of us attended the face yoga event and the breathing session yesterday? कितने लोगों ने attend किया था? Yeah. Also, if you have any suggestions for the community programs that we organize, the next program we'll be organizing is also a very cool program. But if you have any suggestions, always feel free to write to our team. हमारी team को आप जरूर से लिखिए. What programs do you want to be organized? All right. On that note, I want to take this time to also introduce our expert since a lot of us are here for the first time. बहुत लोग पहली बार जुड़े हैं for mindful journaling workshop. We have an amazing expert. Her name is Akanksha Parashar. आपने उनकी फोटो थंबनेल में और पोस्टर्स में देखी भी होंगी. But we've been doing mindful journaling workshops since the year 2022, and Akanksha has been there with us since then. And she has curated different kinds of workshops, and especially for habit builders, उन्होंने ये 5 day workshop का format बनाया है. शी इज़ अ ग्रेट कंटेंट क्रिएटर. वो अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम में भी बहुत अच्छे कंटेंट डालती है. शी विल टेल यू मोर अबाउट इट एंड यू कैन वॉच इट देयर. एंड वो बहुत अच्छे से जर्नलिंग सेशंस लेती हैं. तो feel free to learn from her in the course of 5 days. And if you want, अगर आपको journaling में interest develop होता है, you can always reach out to her separately after that, right? Without any delay, I'll add Akanksha to the screen.
Hello, Akanksha. Hello, good evening, Good evening, everyone. everyone. Welcome again. Thank And Is this sound okay? yes, Thank you so I'll much for the kind introduction. Yamini is so full of energy. Usko sun ke aisa, I also feel energized. And can you imagine she's been working kab se subah se such lit up pace and thank you for the introduction and just doing everything you do for the community and for mindful journaling workshop. Of course, of course. We love to have you here. So, anything. I'll be on the back end, and we have a whole back end team to support us in the journey. We'll begin now. Okay, before we start, the session is going to be in a mix of Hindi and English. So, stay put, be patient, and she'll explain it in both languages quickly. So, mostly in English and some in Hindi. But अगर फिर भी आपको कुछ issue हो, quickly type it in the chat box, and we'll be there to support you. Yes, all yours, Akanksha. Okay. Thank you, everyone. आप सब आए यहाँ. You are all here, and first of all, you should raise your right hand and pat yourself on the back, and congratulate yourself for taking out this time. I mean, already आप योगा भी करते हैं, पूरा ऐसा रूटीन रहता है, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा सेशंस के लिए टाइम निकाल रहे हैं. इससे पता चलता है हम कितने डेडिकेटेड है, आप लोग कितने डेडिकेटेड है अपनी पर्सनल ग्रोथ जर्नी में और कुछ कुछ वैल्यू एडिशन करने में अपने खुद के लिए. So it's great that you're here. I see YouTube comments also rolling and बहुत excitement दिख रहा है. तो एक बार बताएं हैं सब क्या मेरे साथ अभी इस moment में? Are you with me? Yes. Hello, hello, hello everybody. Good evening. Welcome, welcome. ठीक है, तो we'll just get started. थोड़ा सा मेरे बारे में यामिनी ने बता तो दिया है. Rest तो you will learn over the course of next 5 days. But you know, this experience, next 5 days, when you journal, it's almost like being on a date with yourself. In some moments ऐसा लगेगा बड़ा मजा आ रहा है, कुछ ऐसा लगेगा कि अरे ये तो this is not what I expected. But just be with it, huh? Stay through the date, stay through the next 5 days, and just invest that little time that you've come here for. अच्छे से 100% देके आप पार्टिसिपेट करना अगले 5 दिन और देखते हैं क्या होता है. आई हैव फुल इंटेंशन कि अच्छा ही हो और आप बिल्कुल बेनिफिट करो इस प्रोसेस से. पर अगले 5 दिन तक थोड़ा पेशेंटली वेट करना. डोंट गिव अप this on this workshop or on any of the sessions or exercises midway. 5 days करोगे तो फिर मैं गारंटी लेती हूँ कुछ बहुत ही अच्छा आप लेकर जाएंगे यहाँ से, है ना? ओके, तो हम क्या क्या करने वाले हैं अगले 5 दिन में? वी कैन हैव द स्लाइड्स ऑन द स्क्रीन. सो 5 डे का फॉर्मेट क्या रहेगा कि वी गोइंग टू कवर अ बंच ऑफ थिंग्स. सो टुडे इज day 1. Yeah, so this workshop is going to be Monday to Friday this week, and the consecutive days of the week we'll handle these topics that you can see on the screen. So today we will see how we can use journaling to handle stress. हम journaling के थ्रू तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं. कल हम जब मिलेंगे सेकेंड डे पे, we'll talk a little bit about self-reflection. We'll see how we can use journaling once we've addressed the state of our mind which is stressful, which we'll do today, and release that stress. Then how can we reflect? वो जो हमने स्ट्रेस को तो आइडेंटिफाई कर लिया, पर उसको सॉल्व कैसे करना है. तो कल हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे, दे विल बी फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाउ टू शिफ्ट दैट नेगेटिव माइंडसेट इनटू अ पॉजिटिव माइंडसेट. डे 3 पे हम देखेंगे कैसे हम जर्नलिंग को यूज करके वी कैन क्रिएट अ माइंडसेट व्हिच इज वेरी वेरी we give ourselves the opportunity to train our mind to be positive. In our mind, constantly neural connections are being formed. नया नया connection brain में बन रहा होता है. एंड जर्नलिंग एक बहुत पावरफुल टूल है जो हम यूज कर सकते हैं न्यू कनेक्शंस बनाने के लिए. मेंटल पैटर्न्स जिसमें हम फंसे हुए हैं उसको ब्रेक करके जस्ट क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर अस. So that we'll do on day 3, and of course when we get to that day I'll talk about all this in more detail. This is just an overview. Day 4 pe we will see how we can use journaling for self care, for nurturing ourselves. And finally on day 5, which is Friday, we'll see how we can create a good journaling routine. Yes, so we will have some exercises
जर्नलिंग ना एक बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड वर्कशॉप है. जैसे आप योगा करते हो तो इन योगा ऑल्सो यू नो इफ यू सिट एंड जस्ट वॉच Saurabh like this and do not do it, then you know you will not reap all the benefits of yoga. So like that, when you're doing journaling, if you just sit and listen to me, कोई फायदा नहीं होने वाला है. हाउ विल यू बेनिफिट व्हेन यू एक्चुअली डू द राइटिंग प्रोसेस. सो अभी भी अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं या इधर उधर हैं या टीवी के साथ ये वर्कशॉप देख रहे हैं या ऑन द गो है, find a quiet corner mandatory for this next 45 minutes to 1 hour and sit down with a pen and paper where you can you know quietly actually write down. आप actually लिख सके जो मैं आपको exercises कराने वाली हूँ. Yeah, so this is what we will cover on day 5 days, next 5 दिन. And अगर आप 100% दोगे तो मेरा ये commitment है आप कुछ अच्छा ही लेके जाओगे और possibly life transforming लेके जाओगे इन 5 दिनों में. Thousands of people, you know, almost 25,000 people have done this workshop globally, and we have had such great reviews. But you know, only condition is you have to commit yourself to it. Yeah. So are you ready? Give me an R in the chat box if you're ready. रेडी हैं बताओ, आर लिखो चैट में अगर रेडी हो तो. यस, वेरी गुड. दिव्या इज आस्किंग व्हाट इज जर्नलिंग. आई विल टेल स्टेप बाय स्टेप, आई विल शेयर एवरीथिंग. हाँ, ठीक है. Awesome. Everybody is ready. Lots of R's are coming in. Okay, can we move on to the next slide? ओके, तो हैंडलिंग स्ट्रेस. या सबकी लाइफ में स्ट्रेस. हाँ, अभी ऑब्वियसली आप लोग योगा अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो स्ट्रेस लेवल्स कम हो गए होंगे. बट यू नो देयर इज अ टेस्ट दैट वी विल गिव, स्मॉल क्विज एट द एंड ऑफ दिस क्लास. तो यू कैन जस्ट ट्राई दैट क्विज एंड सी एक्चुअली आपका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल क्या है. और आज हम फोकस करेंगे कि जो भी है अपना स्ट्रेस लेवल, या जरूरी नहीं है कॉन्स्टेंटली रहता हो सकता है ऊपर नीचे होता हो, कभी है कभी ज्यादा है कभी कम है. आइदर वे हम जर्नलिंग को कैसे यूज कर सकते हैं उसको हैंडल करने के लिए. हाउ वी कैन यूज जर्नलिंग टू हैंडल दिस स्ट्रेस दैट वी गो थ्रू. I want to tell you about this experiment. We can go on to the next slide. You know, in the late before the experiment, see, right now are you here with me? You check this in your mind. आप यहाँ हो क्या? Are you really here or are you somewhere else? Are you thinking about what to eat for dinner, or when to wake up tomorrow morning, or that phone call you have to return, or something somebody said 2 days ago, or last week क्या हुआ था, अगले हफ्ते क्या करना है? So you know, our mind has a tendency to wander. Wander matlab it'll either go here or there. Where it'll go? It either goes to the future or it goes to the past. होता है सबके साथ. Do you agree? Yes. होता है. Yes. So up mind wanders, which is a scientific fact. There's a lot of research on this. 68% of the time your mind is not in the present. The thing is that when your mind is going to the future, what's happening? What kind of emotions come when we think our mind goes to the future? We can feel anxious, worried, fearful. Oh, will this happen? There is a sense of uncertainty that bothers us. So when mind goes a lot into the future, या मन बहुत ज्यादा अगर भविष्य के बारे में ही सोच रहा है तो भी मन बॉदर होता है. और अगर मन पास्ट में है, if your mind is wandering a lot into the past, then what happens? There is probably, if you're constantly going to the past and thinking about something that happened in the past, there are chances that either we are fearful, either we are regretful, we are guilty कि अरे ऐसे कर लिया वैसे कर लिया होता, काश ऐसे कर ले तो एक ऐसी भावना गिल्ट की भावना रहती है. या फिर फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, गुस्सा, अरे ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, बार बार उसको रील को चलाते रहते हैं. और इस रील को चलाने को आप क्या बोलते हो? ओवर थिंकिंग. हाँ, what is overthinking? Nothing, just ruminating over the same thoughts again and again. अच्छा ऐसे क्यों कर दिया उसने, ऐसे क्यों बोल दिया, मेरा ऐसा क्यों हो गया. You know, constantly you're just churning that wheel and just creating a downward spiral for yourself. Now, this is a tendency of the mind. Until you recognize that the mind has this tendency, you'll not solve for it. Yeah. So we'll see how we can address this over the course of next 5 days. So this we agree that this tendency happens. हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा हो कम हो, but this is a tendency of the mind that we must actively address. Next slide. So
there was an experiment which was conducted in the late 80s at the University of California, अमेरिका में हुआ एक रिसर्च. उसमें क्या किया, लोगों को एकत्रित किया. They got a bunch of people together. We can go on to the next slide. और उनको ना कुछ फोटोज दिखाई. This group was shown some pictures, some videos, ऐसा करके दिखाया, images. We can go on to the next slide. And then this group was divided into two, group A and group B. हाँ, it's a quiz question for you, तो आप ध्यान से सुनिए. ए को क्या बोला कि आप ये जो फोटोज को देख रहे हो अच्छे से देख लो, सी इट वेरी नाइसली एंड कीप इट इन योर माइंड. ग्रुप बी को बोला दैट वॉट एवर इमेजेस यू आर सीइंग, you talk about it to the people in the room. So you share, okay, process this, talk about this, what are you saying, discuss this. So now group A तो देख के चला गया घर, group B ने उसको डिस्कस किया. फिर 1 month later both the groups were called back. Group A भी और B को भी वापस बुला लिया. Now the question for you is, which group do you think remembered what they saw better? Group A को अच्छे से याद था उन्होंने क्या फोटोज देखी, या ग्रुप बी को बेटर याद था? क्या लगता है आपको? टेल मी इन द चैट बॉक्स, ए और बी. ओके, नयना, शिवप्रिया, एकता थिंक बी. अदर्स? बी 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 बी, लॉट ऑफ बी. भारती थिंक्स ए. ओके, स्वप्ना थिंक्स ए. ममता थिंक्स, ममता जी. हाँ, लॉट ऑफ पीपल माइट बी एल्डर टू मी, आई शुड से जी. या ओके, गुड. बी बी मिक्स. हाँ. So when I read about this experiment, I thought obviously it should be B. That is what we'll think, right? If we're talking about it, discussing about it, then it'll retain in the mind. But actually opposite was true. Yeah. What they found through this experiment was that when you're seeing something or experiencing something and you don't talk about it, you don't get a chance to process it, the tendency for it to be deep seated in your mind is more prominent. क्या मतलब? कोई चीज जब आप अनुभव करते हैं जीवन में, अच्छा छोड़ दो अभी चैट. हाँ, जब हम कुछ जीवन में कुछ अनुभव करते हैं, हाँ, देखने की सिर्फ बात नहीं है, एनीथिंग दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ और इवन सीइंग, विजुअली सीइंग, वो जो इमेज है उसका माइंड में, एक तो फोटोग्राफिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, बट अदरवाइज दैट एक्सपीरियंस स्टेज विद यू इफ यू डू नॉट टॉक अबाउट इट, और इन अदर वर्ड्स पुट इट इनटू वर्ड्स. But when you do put it into words, next slide, what happens? 3 things happen. जब हम अपने अनुभवों को, अपने आइडियाज को, जो भी हमारे मन में चलता है, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं बात करके, और इन today's case because we're talking about journaling, लिख कर, then 3 things are happening. Number 1, we can leave the chat box. हाँ, अभी थोड़ा सा इधर हम समझते हैं हम क्या बात कर रहे हैं. Number 1, what happens is that it alters how this experience, idea, information is represented in the mind, and it helps us understand better. Second, it reduces the emotional intensity. जो overwhelming feeling होती है उसको कम करता है. और तीसरा, let go करने में help करता है. It degrades in our memory. Let's take an example. मान लीजिए, you went on a trip. ठीक है, आप एक vacation पर गए. फिर vacation पर first time when you went, you were so excited. So you came back and somebody asked you, how was your vacation? You're like, oh, this was the best vacation ever. The sky was blue. The water was so crystal clear. The nature was amazing. The weather was great. So in your mind, at that point in time, it is the best trip ever. So how your mind has stored this experience is, यार ये तो मेरे जीवन की best trip थी. इससे अच्छा तो कुछ हुआ ही नहीं है. तो एक उसका idea है जो representation में है. ठीक है, और आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, एक इमोशनल इंटेंसिटी है उस चीज के साथ कि कितना मजा आया, आई रियली लव्ड इट एंड इट वाज सो ग्रेट, दैट एक्साइटमेंट एंड इंटेंसिटी इज देयर एंड इट इज देयर इन योर माइंड. बट यू टेल मी समथिंग, अभी आप 2, 4, 6 लोगों को ये ट्रिप के बारे में बताओगे, 1 महीने बाद if somebody asks you again later, 1 month later, okay, how was your trip? Do you think you'll share this experience in the similar way? What will you do? It was a good trip. I liked it. I enjoyed it. It was a nice trip. So great trip becomes good trip. So the representation of this experience, because you've shared it over and over or processed it in your mind, you feel okay in the life's bigger context. It was not that bigger thing. I've also experienced other amazing things. So it was a great trip, not the best trip of my life. This representation changed.
Second, you're feeling all excited and emotional about it. That kind of mellows down. You're able to see things in context, and you're not feeling as emotionally intense about this trip as you felt for the first time. Yes. And third, if somebody asks you, particular details about what happened, which you could recall when you just come back from the trip, now that detail is not there. So you kind of let go of some of this information because it's not on the forefront of your memory. Do you agree with this? Has this happened with you? Yes or no? Yeah. Sita ji is asking, is this true for positive or negative experiences? Both happy and sad के साथ ये रहता है. ये तो आपने अग्री किया कि ये तीन चीजें हमारे साथ होती हैं, पर देखो ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए भी ट्रू है और इंटरेस्टिंग है, यूज कर सकते हैं. मान लो आपका किसी से लड़ाई हो, यू फॉट विद समवन रियली अपसेट in office or wherever, in your circle. You come back home, you talk to a loved one, husband, wife, children, friend, whoever जिससे भी आप बात करते हैं. उन्होंने पूछा अरे क्या हुआ, तो पहले तो आप बहुत गुस्सा थे, बहुत इरिटेटेड थे, फिर आपने बताया तो आपको थोड़ा ठंडा हो गए, आपको दो बात समझ में आई कि अच्छा हाँ शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया. यू दैट representation of that experience is changing in your mind. आप जब बात कर रहे हो उस बारे में, उससे जरूरी नहीं है सामने वाला कोई एडवाइस दे रहा है, आपको ही बेटर समझ में आने लगती है वो सिचुएशन, क्योंकि आप शांत थोड़ा सा बोल दिया, आपने भड़ास निकाल दी, तो आप you're able to process it in a calm way. You're able to understand things better because that emotional intensity has also come down. Because when you experience something for the first time, there's a lot of emotional intensity, but when you talked about it, that emotional intensity has come down, so intellect also starts to work, so you're able to process that thing better. And finally, you're like, okay, I can let it go. You, over a period of time, you're like, oh, it was not a big deal, I say I got irritated one day. Is this true? Does this happen or not? It's just that we've not observed it. And this is why journaling can really come into play. Journaling is what somebody asked. Journaling is nothing. It's about writing down what's on your mind on paper. Journaling क्या है? अपना जो मन में चल रहा है उसको शब्दों में एक पन्ने पर लिखना, उतना ही है journaling. उसकी कुछ टेक्निक्स होती है जो हम अभी डिस्कवर करेंगे इस वर्कशॉप में, बट प्रोसेस जर्नलिंग का यही है. हमारे अनुभव या विचार जो हमारे मन में है उनको हम भाषा में उतारें. Our thoughts, experiences, feelings which are on our mind, we convert them into language, words, sentences onto paper. Actually same हो रहा है. जैसे दोस्त को बता के बेटर फील होता है, आपने बोला ना यू फील बेटर, फ्रेंड को बता के थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है. सेम प्रोसेस हो रहा है, या सेम इमोशनल इंटेंसिटी कम हो रही है, माइंड में उसको समझ आप बेटर पा रहे हो और आप लेट गो कर पा रहे हो. पर जर्नलिंग क्यों करना है? नेक्स्ट स्लाइड देखो. आपको पता है एक इंसान को एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं? 6 to 60,000. कम से कम एवरी ह्यूमन बीइंग गेट्स 6,000 थॉट्स एवरी डे. Do you think it's possible to go and talk about these thoughts and feelings to anyone? Anyone has the time? You have the time? So we get so much overload of these thoughts constantly being bombarded. It becomes impossible for us to, process it with another person. किसके पास है टाइम भाई? आपके पास भी कहाँ टाइम है बैठ के एक एक थॉट डिस्कस करने का, एक एक चीज जो आपके अनुभव में जा रही है. सो जर्नलिंग क्यों हेल्प करता है? Journaling is easily accessible. You don't have to wait to meet somebody. You can pick up your phone or journal just or before sleeping, you can write down these thoughts and feelings. Just converting your thoughts and feeling into words is creating that change in the mind. तो आप बात करने की बजाय अगर लिख भी लोगे उसको, जो भी एक्सपीरियंस करेंगे आप इस वर्कशॉप पे, वो सेम ही इफेक्ट देगा. और जर्नलिंग क्यों हेल्पफुल हो जाती है? बिकॉज इट इज समथिंग दैट यू कैन डू इन योर ओन स्पेस इंडिपेंडेंटली. इजीली एक्सेसिबल है और आप खुद से कर सकते हो, किसी और पे डिपेंडेंस का जरूरत नहीं है. सेकेंड, सो मेनी टाइम्स वी डोंट शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर पीपल बिकॉज वी फील ओ दे विल जज अस, दे विल नॉट अंडरस्टैंड अस. हाँ, अरे मैंने उसको बोला, उसने आगे किसी को बता दिया, तो इनसिक्योरिटी सा रहता है. So journaling gives you a very non-judgmental, safe space, private space to express your deepest thoughts and feelings. Because okay, the journal is not judging me. Other people sometimes not tell something that is bothering to your family. You're like, oh, I don't want to bother them. मैं उनको भी क्यों परेशान करूं, मेरे मन में क्या चल रहा है उसको लेकर. Yeah.
So when you journal, this frustration or anything difficult that you're going through, you get a very safe, comfortable, non-judgmental space. एक आपको बहुत ही सेफ जगह मिलती है अपनी भावनाओं को, अपने मन में जो चल रहा है, अपने थॉट्स को लिखने के लिए, है ना। और तीसरी चीज, क्योंकि देखो जब हम मेंटली चीजें प्रोसेस करते हैं, कुछ लोग के पास एबिलिटी होती है, ये बाकी लोग भी डेवलप कर सकते हैं, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है recognize karna, you know, what kind of patterns you're getting into. But when you write down, it makes it easier for you to recognize, oh, what patterns am I stuck into. Every second, third day you write coming and complaining about something in your journal, you're like, oh, third time I'm writing about this. How much will I complain? Fourth day you'll be like, okay, let me do something about this. Yeah, so all these mental patterns that we get into, journaling helps you not only to identify them, but also to transform them. And you know, it can just create that spark, okay, I need to do something about this. And we learn some of those techniques in the course. Yeah, good so far. So now what we'll do is we'll get started with that writing, because only when you do it will you really experience it. So because आज का theme क्या है, stress को हमें release करना है. So we'll start with a very simple journaling technique. It's called the mind dump. You can go on to the next slide. करना क्या है आपको? You simply have to pick up one topic that you have been overthinking about, worrying about, या कोई चीज जो बस आपके मन में चल रही है आज, इस हफ्ते या एक महीने से, कुछ चीज भी जो भी आपके मन में बहुत ज्यादा चल रही है. हो सकता है वो चीज से आप परेशान हो सकता है जस्ट जनरली चल रही है आपके मन में, ओवर थिंक कर रहे हो आप उसको. सो ऐसा एक टॉपिक उठाएंगे, या अगर एक से कुछ कनेक्टेड है तो भी चलेगा. करना क्या है, 10 मिनट तक नॉन स्टॉप, बिल्कुल रुके बिना 10 मिनट तक सारे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पेपर पर लिखना. Without stopping, for 10 minutes non-stop, you will write down all your thoughts and feelings about this thing that is bothering you onto the paper, onto your journal. You don't have to worry about what language you're writing in. आप किस भाषा में लिख रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी भाषा चूज कर लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, any language you can choose that's comfortable for you. ग्रामर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, कोई आके पढ़ने नहीं वाला है इसको, है ना. जर्नल का पहला रूल क्या है, इट्स अ प्राइवेट बुक. इट इज नॉट सपोज टू एवर बी रेड बाय समवन एल्स. अगर आपको लगता है अरे मैं इस क्लास में लिखूंगी पर किसी ने बाद में पढ़ लिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप करीना बन सकते हो फ्रॉम जब बी मेड, एंड यू कैन जस्ट लाइक टीयर इट और बर्न द पेपर और फ्लश इट इन द डस्टबिन, व्हाटएवर यू वांट टू डू. बट व्हेन यू राइट डाउन, यू रियली ओपन योर हार्ट एंड ऑनेस्टली राइट. जब लिख रहे हो तो दिल खोल के एकदम सच्चे मन के साथ लिखेंगे तो ही फायदा होगा. एक्टिंग तो हम पूरा दिन करते रहते हैं, हम दुखी होते हैं, कोई पूछता है कैसे हो, ठीक हूँ, आई एम ओके, हाउ आर यू, आई एम ओके, तो पूरा दिन चलता ही है. जर्नलिंग में वो नहीं करना है. जर्नलिंग में व्हेन यू आर कमिंग, दैट्स अ स्पेस टू बी authentic and honest with yourself and really open your heart and write down, you know, what's going on. So no, don't worry about language, grammar, privacy, nothing. Nobody is judging you. It's your safe space. You don't have to show this to me or Saurabh or anyone, Yamini, anyone here at Happy also. It's just your private entry. So make sure you're feeling super safe when you're writing this down. Give me a clear in the chat box if you're clear with what you're supposed to do. हाँ, नॉन स्टॉप राइटिंग मतलब फॉर 10 मिनट्स म्यूजिक चलेगा थोड़ा सा बैकग्राउंड में, आपके मन में जो भी थॉट्स और फीलिंग्स आ रहे हैं, कहानी नहीं बना के लिखनी है. इट्स नॉट अ स्टोरी टेलिंग क्लास. आपको ये नहीं सोचना अच्छा मैं इस टॉपिक के बारे में क्या लिखूं. नो, यू सिंपली जस्ट लेट योर हैंड बिकम अ वे फॉर द माइंड टू एम्प्टी. व्हाट इज द डंप, मतलब क्या, कुछ निकाल के कहीं रखना, है ना. तो माइंड डंप एक्सरसाइज का पॉइंट क्या है, हमारे दिमाग में जो कचरा है, ऑल द गार्बेज इन आवर माइंड दैट्स बॉदरिंग अस और ऑक्यूपाइंग आवर माइंड, वी वांट टू टेक इट आउट एंड डंप इट ऑनटू पेपर. सो यू थिंक ऑफ दिस एज लाइक अ क्लीनिंग एक्सरसाइज, कि हमारे मन में जो भी चल रहा है हम निकाल के उसको एकदम वापस पेपर में डाल दे. सो इफ यू कीप दिस माइंड, देन यू नो एफर्टलेस होगा, कुछ भी जो आ रहा है लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो. क्विक एग्जाम्पल, एक स्क्रीन नेक्स्ट करना, स्क्रीन. दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ कैसा दिखेगा ये एक्सरसाइज. मान लीजिए आप कुछ इस तरह का, you know, somebody, you had a fight or an argument with someone and you want to write about that. This is just an example what it might look like. So it's very random. हाँ, अच्छा, इसमें मैंने बुलेट पॉइंट्स डाले हैं, बट आपको बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, आपको नॉर्मल सेंटेंसेस लिखने हैं. दिस इज जस्ट टू मेक अ पॉइंट.
So, maybe when you start writing naturally, your mind mein aayega, oh, why did this person say this? I didn't feel good about it. So express your thoughts and feelings. I felt so hurt, so unseen. What was that all about? क्यों बोला उन्होंने ऐसा? मुझे तो अच्छा नहीं लगा. Then it is possible, हो सकता है मन एकदम past में चला जाए, and then you're like, oh, last time also this happened, and maybe some questions come up. What do I do about this situation? Or you get into reflective mode. Oh, was this my mistake? I'm going to say this. Plotting, planning can happen. So the natural tendency of the mind is to do a lot of things. You don't have to resist it. You have to allow it to happen. Just allow that to come out. So much goes on which we're not able to process. And the whole point of this exercise is to give it a space to come out and lighten your mind. Yeah. ऐसा हो सकता है कि 3 मिनट लिखने के बाद आपको 10-15 सेकंड के लिए लगे रहे मैं क्या अभी मेरे पास और थॉट्स नहीं है तो आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हो आई डोंट नो व्हाट टू राइट अबाउट व्हाट डू आई से आई डोंट नो हो सकता है उसके बाद कनेक्टेड उससे कोई और आपको दिन याद आ जाए जब ऐसा कुछ हुआ था कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं शुड आई टेक अ स्टांस हियर ऐसा कुछ ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या वो एक डायलॉग होने दो नेचुरली हाँ जब लिखोगे तो होगा बट इट्स गुड टू अलाउ योर सेल्फ टू let it happen. Okay, so I hope this is clear. Still, if you have any questions, you can put it in the chat box. I'll try to answer. And okay, so we'll start the timer here. Of course, Indra ji पूछ रही है, should I write my problems only? Don't write about, oh, I have this problem, that problem. No. You have to write, okay, I have this problem. How do I feel about it? You have to write your thoughts and feelings. आपकी भावनाएं और आपके thoughts क्या हैं एक problem के बारे में. कोई एक चीज उठाइए उसके बारे में लिखिए अगर लगता है कि अच्छा उसके बारे में लिख लिया तो दूसरा टॉपिक उठा लेना पर असल बात यह है कि असली में कैसा फील हो रहा है अंदर से उस बारे में लिखिए जो भी परेशान कर ठीक है वी कैन स्टार्ट द टाइमर 10 मिनट का भी स्टार्ट करते हैं
Continue writing till the timer is on won't stop. कोई भी भावनाएं उठ रही हैं उन्हें resist ना करें. Just write down and let that stress, that anxiety, the overthinking come out on paper. जो भी है मन में चल रहा है उसे पेपर पे लिखेंगे और बाहर आने देंगे. We'll resume in about 5 minutes. Let's continue to write. पढ़ लिया हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो चैट में डाल सकते हैं. Once you've done your writing, you can share what transformation or experience you had after writing this journaling exercise.
Hope you all completed with. Okay, let's come back. You can share your experiences when you've written down. A lot of people are saying feeling fresh, nice, light. Very, very good. Yeah. Crying. It's okay. I also used to cry a lot initially when I started to journal. There's so much pent up no inside. Nikalta nahi hai wo. So it's good. Shubham is asking what's the benefit. You see the chat box. Yeah, people are feeling light. It's like some fear, anxiety has come out. Haan, Veema Batra ji, read to you. I didn't ask you to read. Don't read what you've written. You've taken out trash. Why are you taking in trash again? Just write it out. Either keep it aside or just throw it in the dustbin. Tear and throw it in the dustbin. Kanchan ji is feeling relaxed by writing. Very, very good. So most of you are feeling lighter. Yeah, feeling a little better, like something has come out of the system. Some people are not feeling very clear about the feeling. Some people are feeling okay, what to do about this now? I have all this, but what to do? How to deal with this, right? उसके लिए कल है ना? कैसे उसको चेंज करना है, स्विच करना है from negative to positive? We'll learn tomorrow. But it's like it's okay. All tight hugs to everybody who's saying cried a lot, feeling emotional. It's very natural. देखो ऐसा नहीं है लिखने की वजह से रोए. ऑलरेडी वो सिस्टम में है स्ट्रेस. अभी एड्रेस किया तो फिर लगा कि रोने का मन किया. It's already something that was bothering you inside your heart. Only you got a space to express it so that tears came out. So it's okay, completely healthy to cry, and it's good. Yeah, Preeti is feeling light, crying a lot, feeling lighter. जिन लोग को लग रहा है अभी लाइट नहीं फील हुआ, इट्स ओके, गिव योर सेल्फ टाइम. या देखो क्या रहता है कि सम पीपल आर नॉट यूज टू अक्नॉलेजिंग देयर इमोशंस, देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स. सो जर्नलिंग कैन कम बी रिलेटिवली हार्डर फॉर देम, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. थोड़ा आप अपने आप को पेशेंस और वक्त दो. It can become a great tool for stress release. If I specifically talk about today, it's like अभी देखो दिवाली गई है. दिवाली पे क्या करते हैं, हम पूरे घर की सफाई करते हैं. If you're not cleaning, let's say there is a carpet in your house and you're not cleaning the entire year, and only in Diwali you decide, okay, I'm going to clean this up. Still, what will happen? You'll clean the carpet, all the dust will come up, and you'll be like, oh, the house has gotten even more dirty. I was trying to clean the carpet, but it's gotten even more dirty.
Does that make any sense? Journaling is like that. You're trying to clean it up. Initially that dust will come up because वो करा ही नहीं है इनर वर्क कभी बैठ के, अक्नॉलेज ही नहीं किया अंदर क्या कचरा इकट्ठा कर रखा है. तो कोई बात नहीं, रोना आ रहा है तो भी ठीक है, यू विल फील बेटर टुमारो. और जो कचरा है अगर दिख रहा है कि भाई अरे ये तो क्या भर रखा है, वो भी ठीक है. नहीं तो क्या है, इफ यू कीप कैरिंग दिस यू विल express this kachra in different and unexpected ways to people. You know, sometimes you're upset because of something, कोई आपसे बात करने आता है, आप उस पे ही गुस्सा हो जाते हो. क्यों होता है वो? क्योंकि प्रोसेस नहीं की फीलिंग्स. सो थॉट्स और फीलिंग्स प्रोसेस करना हेल्दी है, which is what we're trying to do here. We can have different experiences. Be patient with yourself a little. This is a very simple, basic, but a powerful exercise for you to, find a space to open yourself up. ये एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है अपने आप को खोलने के लिए. अपने मन दिल में जो चल रहा है, जो किसी से शेयर नहीं करते हो, बॉदर करती है चीजें आपको, वो आप एक्सप्रेस कर पाते हो. तो इट्स समथिंग दैट अलाउज यू टू एटलीस्ट ओपन अप. वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? या लेट्स सी. एक बार स्लाइड चलाते हैं वापस. अपना एक बहुत इंट्रिंसिक नेचर है क्या अपने आप को एक्सप्रेस करने का. जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्या होता है, हम ऐसा फील करते हैं जैसे हमें किसी एक डब्बे में किसी ने बंद कर दिया. द ड्राइव फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी नेचुरल एंड इंट्रिंसिक टू अस. रिसर्च शोज if you do not express your thoughts and feelings, if you're trying to keep everything अपने अंदर ही रख रहे हो, वो स्ट्रेस कॉज करता है, हेवीनेस कॉज करता है आपके लिए. और सिस्टम में बोथ इन योर माइंड एंड बॉडी इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अनवेलनेस. मतलब बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हो कि अच्छा नहीं है वो आपके लिए. तनाव तनाव पैदा करता है वो आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपकी एफर्ट्स में, आपकी प्रेजेंस में, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. मतलब क्या है एक्सप्रेस करने का? मतलब ये नहीं है सबको जाके सब कुछ बोल देना. दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड बाय द वे दैट इज one reason. If you feel you're not able to speak your mind, that's the biggest thing that will cause you stress. But just generally anything, मान लीजिए आपकी कोई identity है, you identify in a certain way which is not acceptable in your society, that can cause a lot of stress, lot of difficulty, lot of anxiety, stress, trauma, right? सिंपल चीजें होती हैं. मान लो आप मेरे 2 साल हो गए अभी शादी को, बट इफ यू गेट मैरिड, गो टू अ न्यू हाउस, right? I knew my husband पहले से, तो it was much easier. But so many students, have come to my workshops. Just moving to a new city, getting married, getting a new job, ये सब चीजें जो बड़ी अच्छी लगती हैं, लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया चीजें हैं लाइफ में, इसमें बहुत सारा चेंज आता है. जहाँ पे मौका नहीं मिल पाता खुद को एक्सप्रेस करने का, आप जैसे हो, या अभी आप सोचो, अभी जो इंसान कॉलेज से नौकरी में जा रहा है, they are used to being so free and chill in college, but now they have to constantly be in a particular way in their official space. So that restricts the freedom of expression, self expression. Let's say somebody got married, goes to a new house, they can't be like they were at their parents place, at least for the initial while. So that constant pressure of holding yourself back can create a lot of pressure on the system. या आप मान लो नए शहर में आप गए, आपको समझ नहीं आ रहा है अभी कैसे यहाँ पे एक्ट करना चाहिए, योर गार्ड्स आर ऑलवेज अप. या आपकी फैमिली में कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, काम में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जहां आपको लगता है अरे यार लोग या तो मुझे सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, या आपके अंदर ऐसी बहुत बातें हैं जो आपको मौका ही नहीं मिलता है बोलने का, या तो कोई है नहीं सुनने के लिए, या आपको लगता है कोई समझेगा नहीं, या फिर आपको लगता है आपको जज करेंगे, या बहुत सारी चीजें किसी को बोलना चाहते हो बट आप बोल नहीं पा रहे हो. देयर इज अ लॉट इन यू दैट यू वांट टू शेयर और से और एक्सप्रेस, बट बिकॉज यू डोंट डू इट फॉर वट एवर रीजन, यू आर नॉट डूइंग इट, चाहे घर की शांति के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ऑफिस है तो प्रोफेशनल सेटिंग है, रीजन कुछ भी हो, आपके सिस्टम पे वो स्ट्रेस डाल रहा है. सो हाउ जर्नलिंग कैन हेल्प यू हैंडल दिस स्ट्रेस? बाय टेकिंग इट आउट. हमने सिंपल वे एक्सप्रेस किया राइटिंग में अभी जब हमने किया. एक इसका और फॉर्म है जो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बट वेरी पावरफुल, और रिलेशनशिप्स में स्पेशली हेल्पफुल रहती है ना. वील गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्या बोलते हैं इस एक्सरसाइज को? आई कॉल इट द अनसेंट लेटर. एक लेटर जो आप कभी भेजोगे नहीं किसी को. ये लेटर आप एक ऐसे इंसान को लिखिए, ठीक है, जिससे आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, कुछ थॉट्स या फीलिंग्स, पर आप कह नहीं पाते. आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, बॉस हो सकता है, पास्ट में कोई इंसान था वो हो सकता है,
कोई इंसान जिसको आप कुछ कहना चाहते थे पर वो चले गए इस दुनिया से, वो हो सकते हैं. So anyone where you have some things you want to say, या आप बोलना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, चाहते थे पर नहीं कर पाए, पर वो अंदर हैं बातें. Those things, those thoughts and feelings are still inside you, and because of some reason you're not able to express, that is what you will write in this letter. Now this is an unsent letter, so this letter you will not go to the person. ये कभी आप किसी को दोगे नहीं. ये लेटर लिखने के बाद हम फाड़ देंगे या बंद करके रख देंगे कबर्ड में. दिस इज फॉर nobody to read. So because अभी कोई पढ़ने नहीं वाला है, आप अपना दिल खोल के लिख सकते हो. You can really feel safe, free and right without inhibition. You can really express yourself without thinking of a consequence. Yeah. So are you getting this? Is this clear what you have to do? We'll give you 10 minutes to write this letter. Write your deepest thoughts and feelings that you're not able to tell to somebody. These can be things about yourself, about how you feel about a topic, some complaints you have maybe, या आपसे कोई गलती हो गई, आप अपोलोजाइज करना चाहते हो पर कभी हिम्मत नहीं हुई बोलने की. कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ, you're never able to resolve it, but you want to write some express something, your thoughts, your opinions around it. या सिंपली कुछ वेंट करना है यार, किसी को बताना है यार, मुझे ऐसा लगता है इस बारे में, पर आप नहीं कर पाते हो, विच इज ओके. होना भी नहीं चाहिए. अनसेंट लेटर का कंटेंट डायरेक्टली बोलना भी नहीं चाहिए लोगों को. देयर शुड बी अ स्किलफुल वे टू कम्युनिकेट. I will talk about that later. But the idea is to just write down your deepest thoughts and feelings into an unsent letter, जिसमें आप सब कुछ अपना निकाल के खाली हो जाओ. क्लियर है सब? टेल मी अ क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर क्लियर है. अभी के लिए एक लेटर लिखेंगे, है ना. कोई एक इंसान को पिक करो जिससे कुछ बातें कहनी है पर कह नहीं पाए या कह नहीं पाते हो. One person who you're not able to completely express, or there's a particular topic you want to talk about but you've not talked about it to anybody, it bothers you. You have to write about that. Okay. Okay, so we'll start the 10-minute timer. I know we have some questions, we'll take them tomorrow before class, but right now be sincere and write this letter. I'm telling you, you'll be so free. Yeah. Okay, whatever negative thoughts, whatever it is, you just write it down. Let's start.
can share your experience in the chat box. एक बार लिख लेंगे तो लिख सकते हैं chat box में कैसा रहा आपका experience. Last 1 minute, we can wrap up. Feeling overwhelmed and relieved, was able to express. Wonderful. Relieved, felt weepy, crying. Lot of people crying, huh? It's okay. काफी कुछ जो था अंदर निकल गया. Have a nice meal after this class. Lots of water and breathe it out. Feeling realized, relaxed, light. Okay. मन हल्का हो गया. It's nice feeling good. Now it's possible कुछ लोगों के लिए emotions बहुत ऊपर उठ गए हो. Give yourself some time to process it. थोड़ा सा वो कर लें, शांत कर लें अपने आप को तो सही रहेगा. आज हमने देखा है how we can use writing to at least take all the stress that we have out of our system. Tomorrow we will see how to transform this into something positive for us. Yeah. With that, we'll wrap up today's session. Quickly, I'll share the homework with you. One, there is a bonus video for you to see. So, uska link hum group mein dal denge. Just go to the next slide. Yeah. So, in this, since you're starting this journaling journey, there are some helpful tips for you. This is a short workshop. I wanted to share more that you can benefit from. So, this is on my YouTube channel. The link we'll share with you. You can see it. इसके अलावा there are two more homeworks that you can do. One is take the stress and anxiety quiz, which will just give you a sense of what are your stress and anxiety levels. Just a quick test. We'll see क्या करना है उसका कल. And second, there is an expressive writing exercise that also screenshot we'll share with you. Expressive writing is a more elaborate form of writing mind down. But again, उसमें हम थोड़ा सा और हिम्मत जोड़ के अपने जो डिफिकल्ट थॉट्स और फीलिंग्स उनको प्रोसेस करते हैं. सो इट इज ऑप्शनल, बट इफ यू फील अप टू इट, यू डेफिनेटली कैन ट्राई. स्पेशली अगर कोई लोग को लग रहा है बहुत इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं तो वो स्किप कर सकते हैं होमवर्क. बट इफ यू फील ओके, आई एम इमोशनली रेडी टू प्रोसेस समथिंग which is bothering me inside, definitely take this on. Yeah. Obviously जब हम ये वाली राइटिंग करते हैं, चाहे वो माइंड अप है, एक्सप्रेसिव राइटिंग है, thoughts and feelings come up which we've not otherwise addressed, but letting you know in the long term it will help. And this is something you can try, right? Anyway, it doesn't work, but give it 5 days to try it for yourself. We'll meet at 8:15 tomorrow for some Q&A, and then start the class at 8:30 p.m. Do you want to add, Yamini, before we wrap up? Do you want to add something? Yes. That's So so thank you so much. Akanksha, एक second mute करना. Thank you so much for taking that session today. I think our members really enjoyed it, and we could see so many emotions come up for everybody, some good, and I mean, it's good to let it out sometimes. So, very, very happy that you were able to do that. Um, the homework, yes, we will put it on the WhatsApp group. If you've noted it down, that's great. Otherwise, we'll send it back to you again. If you've joined in late, or you were unable to join because of any reason, or your friend was unable to join, tell them about this workshop, and we will share the recording links on the WhatsApp group so you can access it from there. If you have any questions, do not hesitate to reach out to our support team. We are all here to help you. Yes, that's it. It's 9:30, time to sleep. Hope this session gives you some peace to sleep peacefully. We'll see you tomorrow for yoga again. Have a good night. Bye bye. Take care. Thank you so much, Akanksha.